sexual assaults and physical assaults is hair. So how you will do you will conduct the examination of hair. First, you should know the medical legal importance of hair as a trace evidence. So medically really क्यों important है जो है hair? You can identify an individual with the help of hair. इसके अलावा फिजिकल असॉल्ट्स में जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ असाइलेंट जो है उसमें हेल्प आउट करता है. सेक्सुअल असॉल्ट्स में यू कैन आइडेंटिफाई द असाइलेंट विद द हेल्प ऑफ हेयर फाउंड ऑन द क्राइम सीन और ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम. इसके अलावा पॉइजनिंग केसेस में आपको जो है हेयर जो है वो बहुत हेल्प आउट करता है. यू कैन आइडेंटिफाई द पॉइजन और यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ द पॉइजन यूज्ड इन केसेस ऑफ पॉइजनिंग, स्पेशली इन heavy metal poisoning. So, what information you can gather from here? You can have an idea of the age, you can identify race of the individual, or you can identify the sex. इसके अलावा किस साइड्स का वो हेयर है, यानी आपकी वो हेयर हेड हेयर है, प्यूबिस हेयर है, एक्सिलरी हेयर है, ये आपको पता लग सकता है. इसके अलावा फर्दर स्पेशल फीचर्स, पॉइजनिंग वगैरह या ट्रॉमा हुआ है या किस किस्म की असॉल्ट हुआ है, उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यू कैन हैव यू कैन हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हेयर. इसके अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो है वो हेयर जो है बहुत हेल्पफुल है. सबसे पहले तो you have to differentiate between hair and fiber. So on just looking at the fiber and hair, you can differentiate between the two. Now, when you have confirmed that it is hair, then the next thing is whether it belongs to human or it is of animal origin. इसमें आप precipitin test वगैरह करेंगे, and once you have confirmed that it is a human hair, then you can have an idea or you can gather information regarding race, age, sex and site of the hair और इसके अलावा special features जिसमें आपको यानी जो है आपको पॉइजनिंग वगैरह ट्रॉमा वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. इसके अलावा आपको टाइम सेंस के बारे में भी आइडिया हो सकता है विद द हेल्प ऑफ हेयर. और इसके अलावा आपको जो ना कुछ यानी एविडेंस यू कैन गैदर एविडेंस इन रिलेशन टू क्राइम कि किस टाइप का क्राइम हुआ है, उसके बारे में भी यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन व्हाइल यू आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ हेयर. Now, what is the nature of the hair? It is an appendage of the skin that grows from the hair follicle, and it has basically three parts: root, shaft, and a tip. And hair root lies in the follicle, which lies in the dermis, and the shaft grows from the skin and it projects out. ये जो आपको hair नजर आता है, it is basically the shaft of the hair, and the distal end जो है वो आपकी वो it is known as the tip of the hair. Now, both human and animal hair consist of cuticle, cortex, and medulla. Cuticle is the outer zone and it consists of the scales of scalp. The pattern of the scales are different in human and animal hair. Okay? So with the help of microscopic examination, you can differentiate between animal and human hair. Cortex is the middle zone of varying thickness and it consists of longitudinal thickness and varying amount of thickness. Medulla is the inner zone and it is also known as medullary canal. Now, what is the medullary index? It is the ratio of the diameter of the medulla to the diameter of the shaft. अब कहाँ से आपको हेयर जो है क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं हेयर की? From appearance of the cuticle and medulla, the relative size of the medulla and the cortex on the cross section, and yeah, you can have an idea about the source of the hair. Okay? Human hair are basically fine and thin with narrow medulla and thick cortex. Human hair है उनमें आपका जो medulla होता है वो narrow thin होता है और cortex जो है वो thick. Whereas animal hair is coarse and it has thick, broad medulla and thin cortex. उसमें medulla जो thick और broad है और cortex जो है वो thin. अब आप एज किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट? द lanugo hair of the newborn are fine, soft,
non-pigmented, non-modulated, and with smooth edge. So, with any naked eye examination, a newborn है, ठीक है, soft होंगे, fine होंगे, non-pigmented होंगे, बिल्कुल you can clearly identify newborn hair by just looking at them. Now, these hair are replaced by the hair which is comparatively less fine pigmented and modulated with a scale pattern. Pattern scales बनना शुरू करते हैं when the age grows. Okay? And each sequence of the appearance आपके जो with the age जो आपके hair हैं उनके color changes हैं यानी आपके with when you grows or when a person grow older तो आपके जो hair color है वो change हो जाता है. इसके अलावा जो आपकी जो pubic और axillary hair है अगर आप इसका microscopic examination करेंगे then again they are different from each other and with the help of microscopic examination you can clearly differentiate between. So this is human hair and this is animal hair. So, so this is how you can clearly differentiate between human and animal hair by just looking at the by just having a ह्यूमन हेयर है ये फाइन है जबकि ये कोर्स है. ठीक है, ठीक है. और इसमें जो है आपका मेडुला जो है ह्यूमन हेयर में वो थोड़ा ठीक है कॉर्टेक्स है जबकि एनिमल हेयर में कॉर्टेक्स जो है वो थिक है. So this is how you can differentiate between human and animal hair. What are the special features or special information which you can gather from here in identification? आप जो है with the help of hair अगर उसकी जो है root intact है you can conduct DNA fingerprinting and you can identify the individual. From one hair we cannot say that a hair can come from a particular individual, but careful examination can reveal the identity. अगर उसका hair bulb revealed है अगर उसका attached है तो you can conduct DNA fingerprinting. इसके अलावा डैब्रिस ग्रीज इसके कोई भी चीज जो है वो which is adherent to the hair it may give a valuable information regarding the incidents. यानी किसी भी किस्म की जो आप जो है यानी डैब्रिस है कहाँ से आपको जहाँ पे भी आपको हेयर पे कोई भी चीज लगी हुई मिल सकती है क्राइम सीन पे तो आपको आइडिया हो सकता है कि जो है वो क्राइम यानी इन्वेस्टिगेशन में ये आपको हेल्प आउट कर सकता है और आपको आइडिया हो सकता है कि difficult to find out in one hair unless considerable number is. इसके अलावा जो आप ब्लड ग्रुप्स जो वो डिटरमाइन कर सकते हैं with the help of hair. As the hair resists putrefaction, so they can be helpful in identification of an individual. Dead bodies, unknown dead bodies में identify कर सकते हैं आप individual को with the help of hair because they resist putrefaction. इसके अलावा heavy metal poisons can be detected in case of poisoning. जहाँ पर यानी even after death जो है अगर आप hair examination conduct करें and you have a suspicion of heavy metal poisoning, then you can conduct the examination of you can conduct specific examination on hair और उससे आपको जो है रिवील हो सकता है कि जी heavy metal poisoning हुई. You can hair. Now, what information you can have about the crime from the hair. Now, careful examination of hair and stains on the hair may provide valuable clues regarding the nature of the offense and cause of the crime. According to the Locard's exchange principle, hair are exchanged during contact. So, physical assault से भी और sexual assault से भी आपको जो है according to Locard's principle जो है पता लग सकता है you can have valuable clues regarding the nature of the offense and the cause of the crime by just examining the hair. इसके अलावा injuries to the hair show characteristic changes. Sharp
वेपन अगर यूज हुआ है तो इट विल कट द हेयर। ब्लंट वेपन जो है वहां पर हेयर बल्ब आपको क्रश्ड मिलेगा और हेयर भी आपको क्रश मिलेगा। बर्न्स में यू कैन फाइंड सिंजिंग ऑफ हेयर, टिपिकल आपको यू कैन हैव एन आइडिया कि यहाँ पे बर्न यानी जो है यहाँ पे फायर यानी फायर यूज हुई है या बर्न हुआ। इसके अलावा हेयर बल्ब विल बी प्रेजेंट इफ फोर्सफुली एक्सट्रैक्टेड। अगर किसी ने एक्सट्रैक्ट किए हैं, पुल किए हैं, हेयर बल्ब विल बी प्रेजेंट। And in case of homicide, some portion of the hair belonging to the assailant may be found clutched in the hands of the victim. इसके अलावा आपको hands of the victim में यानी अगर कोई बॉडी ऑफ विक्टिम पे या हैंड्स ऑफ विक्टिम पे आपको जो है साइलेंट हेयर्स आपको मिल सकते हैं। अब पॉइजनिंग केसेस में हाउ हेयर will have. In cases of poisoning, especially chronic poisoning, the hair retain traces of the poison for a considerable time. As I have already told you, कि heavy metal के traces आपको मिल सकते हैं hair में on examination. For coming as a minimum of 15 hair is desirable. So जहाँ पे भी आपको poisoning के suspicion है, hair should be plucked with the roots for the examination of clean hair at least shadow of pluck out there. The analysis of the successive short lengths of hair from base to tip gives an appropriate indication of the dose and intermittent period of such examination. So by just having examination of the hair, you can have an idea of about that one. आपको hair examination से you can gather these information. Now hair cease to grow after death, but due to shrinkage of the skin, there is apparent growth of the hair of the face. Rate of the growth of the hair is about 0.4 millimeter per day, and an approximate idea of the time since death is made. So, अगर आप यानी you can have an idea of the time since death. इसके अलावा hair examination में जो है decomposition में loosening of the hair occur due to decomposition of the skin on 48 to 72 hours after death. So after 40 to 8 to 72 hours after death, loosening of hair will occur due to decomposition of the skin. और अगर आपकी exhumation अगर जो exhumation and the hair change color in about 1 to 3 months, whereas in deep grave it occurs in 6 to 12 months after per year. ठीक है, डीप ग्रेव होगी तो 6 to 12 months में जो है हेयर कलर चेंज होगा, और अगर शैलो ग्रेव है तो उसमें 1 to 3 months में हेयर कलर चेंज होगा. Now, what are fibers? We have discussed about the hair. We have to differentiate between hair and fibers. Fibers are quite homogeneous. So, इनकी जो मेकन टाइप है, जो फाइबर की जो homogeneous ये, और once you will see them under microscope, then they are devoid of cuticles. So you can easily differentiate between hair and fiber. Next is the examination of the jaw. It is important in cases of poisoning and in cases of venereal diseases. In source कहाँ है, आप यूरिन कहाँ से collect कर सकते हैं? Urine can be collected both in living as well as dead person. Living cases में after authority and consent urine collected after introducing catheter. ठीक है, और in venereal diseases sterilized containers are used for culture for both male and female separately, and if the bacteria are identical, then it is then considered sexual assault has taken place. So लिविंग केसेस में आप विद कॉन्सेंट जो है वो आप यूरिन कलेक्ट करते हैं. In cases of poisoning, for example, in alcohol poisoning, urine is collected in a clean container, and after collecting the urine, it should be kept airtight to prevent evaporation. And in dead bodies, suprapubic puncture or open the bladder, and with the help of disposable syringe, urine is collected.
तो आप या तो डायरेक्टली व्हेन यू आर कंडक्टिंग ऑटोप्सी डेड बॉडीज में, तो आप वाइट बोन नीडल से आप सिर्फ प्यूबिक पंक्चर करेंगे और वहां से आप जो है यूरिन कलेक्ट कर लेते हैं। या आप ऑटोप्सी अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो यू विल ओपन द ब्लैडर एंड और डिस्पोजेबल सिरिंज से आप यू विल कलेक्ट द यूरिन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लैडर। Nails and nail scraping. Trace evidence, as you can identify the assailant with the help of these. So nail scrapings can be dry or wet, and if wet allowed to dry, then carefully remove it with the help of blunt scalpel. The other method is to cut the nails and collect the scalpel. So nail scrapings आपको मिलती हैं, nail scrapings होती क्या है? Basically these are the epithelium. जहाँ पर भी सेक्सुअल असॉल्ट या फिजिकल असॉल्ट होता है तो आपको एपिथेलियम के रेमिनेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर इफ इट इज वेट देन इट इज अलाउड टू ड्राई, और आप विद द हेल्प ऑफ अ ब्लंट स्कैल्पेल यू कैन रिमूव द स्क्रैपिंग। और better method is you can cut the nails or directly you can like this from the under surface of the nail. And then you can subject it to further examination and you can identify the effect. Metabolism of the poison is close to the root of the nail. In living person, if we want to collect the specimen of the nails in living, then margins are marked, special markers. Nail is allowed to grow, and when it reaches to the tip of the finger, then it is cut. In dead bodies, when the nail examination is required, the whole nail is plucked or pulled out. Next important trace evidence is clothes. Clothes must be carefully examined before dispatching to the lab. What examination you will conduct? You will do the naked eye examination of the clothes. You will examine the clothes with the help of hand lens, and you will do the UV lamp examination of the clothes. So the clothes may have stains on them, and the stained area examination is very important. ठीक है, जहाँ पे भी फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट होता है वहाँ पे क्लोथ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू कैन फाइंड द स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स। तो फर्स्ट यू विल डू द नेकेड आई एग्जामिनेशन, इसके बाद आप जो है हैंड लेंस से जो है स्टेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो आप हैंड लेंस से एग्जामिनेशन करते हैं, और इसके बाद आप यूवी लैम्प से एग्जामिनेशन करते हैं। और इसके बाद जो है ना आप स्टेन्स को अगर जो है ना आप यानी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन द स्टेन एरिया हैव पेक्यूलियर टच एंड ऑर्डर डिपेंडिंग किस मटेरियल का स्टेन है, सेमिनल है, ब्लड का है, या जो है उसका स्लाइवरी स्टेन या वॉमिटस वगैरह का स्टेन। The clothes, when once you have find the stains, then you will encircle them. You will sign the clothes and the stained areas. You will mark the separate plastic bag. अगर if the stains are wet, then you will air dry them first. और उसके बाद आप जो है वो जो stained area है उसको encircle करेंगे, मार्क करेंगे, वहाँ पर आप अपने साइन करेंगे when you are conducting examination as a medical legal doctor या ऑटोप्सी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आप ऑटोप्सी कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपने एग्जामिनेशन करेंगे, वहाँ पे MLC अपना नंबर जो केस आप कंडक्ट करें उसका MLC नंबर, मेडिकल लीगल नंबर, मेडिकल सर्टिफिकेट नंबर या फिर पोस्टमार्टम PMR नंबर, वो आप उस पर जो है लिखेंगे और साइन करेंगे, और उसके बाद आप उसको सील करेंगे क्लोथ्स को प्लास्टिक में बैग में, और उसके बाद आप उसको हैंड ओवर करेंगे फॉर फर्दर एग्जामिनेशन।